Good morning, friends, Good Good morning. morning. Good morning, Dr. and Saab. we Good welcome morning, you Puri all Saab. to Slight Alumni Association. And this is a next video, live video from Dr. Anil regarding improvement of energy efficiency of air conditioning and HVAC. We have got two experts in this particular field. We who have been into this field from the last more than 20-25 years, and Dr. Anil is already having an experience in industry as well as in teaching, whereas who is a doctorate in this particular subject, whereas we have Mr. Anoop Sharma, who is into specifically proper implementation of the processes of this particular segment. So we have a combination of both theory and practical with us. So you guys will be able to answer, we'll be able to get answers from experts in research as well as from the industry. So I welcome Mr. Anoop. Please introduce yourself. Yeah, thank you, Puri Saab. Myself, Anoop Sharma. Uh, I'm passed out from Longowal in 1998 with a specialization in welding technology. Then I worked for 12 years in the industry where we were working for the vacuum systems, which is more or less related with the air conditioning, ventilation, and heating system. Then in year 2012, I started my own unit, which is catering for the industrial automation, which specifically working for improvement of the energy efficiency of air conditioning systems. So right now, uh, I'm based in Derabasi in Chandigarh. So we are looking for the industrial automation and other units for all the process industry. So this is my brief introduction. Thank you, Purisa. Welcome, Anoop ji. Anoop Sharma. We will get a lot of insights from you. And Dr. Anil is there with us. Dr. Anil is an expert in this particular field. He is a doctorate and working as a head of mechanical department. Dr. Sir, please introduce yourself. Good morning, everyone. So, first of all, I'd like to thank Mr. Puri and Gaurav Chitwal for giving us this opportunity. And regarding my experience, I passed out in 98 and I did BTech in mechanical engineering with a specialization in welding technology. So, my first job was in this Indian Acrylics Limited. Uh, I worked there as a shift engineer and I served there for 5 years. After that, I switched to another company named as Anchal Paper Industry. There I worked for 3 years, and then ultimately I switched to teaching industry. My first job in teaching industry was at Lovely Professional University. So I worked there for 3 years, and now presently I am working at Indo Global College of Engineering. It is located at New Chandigarh. Now, there I am working as associate professor and head of the department from the last many years. So, this is my brief profile. Uh, Regarding this subject, I also did my this PhD, postgraduate and doctorate in the same subject, in the same topic. I have conducted a very intensive survey on energy efficiency of small and medium scale industries, clusters of Mandi Govindgarh, Ludhiana, and Himachal units. So that is why I am very eager to take up this topic. So thank you for this opportunity. Yes, So, let's start with the presentation. so let us start with the presentation. Okay, I have in these are the brief contents of my presentation. First, I will explain the energy scenario of HVAC systems. Then we will take up concept of refrigeration, air conditioning, and cooling. Then I will describe the components of this HVAC system, what is the working of air conditioner, and what are the factors that affect the AC efficiency. Then we will discuss various energy saving tips, and we will also take few terms that is related to performance metrics, and at the last I will conclude the presentation. Now, as we all know that heat, ventilation, and air conditioning systems, these are the most energy
intensive equipment in any building, and their growth is they're growing at very fast pace at the rate of 20% per year. And as per present scenario, they are taking up around 30% of the total energy consumption in Indian residential and commercial buildings. And it is expected that if this demand is keep on increasing by this way, and as per planning commission report, we will require at least 300 new coal-fired power plants, each of 500 megawatts, to cater to this our increasing demand. So from here you can see how important is the energy efficiency, because if we able to run these big units with high efficiently, we can reduce the energy consumption drastically. So in the next slide, I will give you some this few basics about the refrigeration system, because these will be required later on. Now, first we will take up the difference between refrigeration, air conditioning, and cooling. Now, refrigeration is a process of removing heat from any space to maintain its temperature well below the ambient temperature. Now, to keep the temperature below ambient temperature, we need some external work. So, refrigeration is the main process in which we perform some external work to keep the temperature of the system below the ambient temperature. So the best example of refrigeration system is home refrigerator, cold storage. One more thing this is that in refrigeration we are least bothered about the air quality. Second one is air conditioning. Air conditioning is somewhat more complex process. In this case, we maintain the temperature as well as the quality of air, and for this we need to maintain the air quality within the human comfort zone. So we maintain four parameters. First one is air temperature. We keep it between 22 to 27 degrees Celsius. Second is relative humidity. It should be between 40 to 60%. Third one is airflow. It should be 8 to 12 meter per minute. And last one is air quality. We maintain the air quality with the help of various types of air filters. Now, for all these processes, if we may require to add heat or remove the heat from the space. Last one is cooling. Cooling is the process in which the temperature of any substance which is already above the ambient temperature is lowered down due to some thermodynamic process. For example, cooling of hot tea or coffee. So the tea or coffee is cooled down after some time due to the evaporation process. So cooling is a natural process which does not require any external work. Now, before we further move on to the other slides, let me explain the main difference between HVAC and AC. HVAC refers to heat ventilation and air conditioning, whereas air condition is generally designed to condition and cool the indoor air. So basically, an all-weather air conditioner can be said as a HVAC system, because in our homes, the old installed ACs are simple AC, but the latest models they can run in both directions. They can cool the system or they can even heat the system. So from now onwards, I will only take up the air conditioning systems because it will be more relevant for our discussion. So this is a typical example of an industrial system which comprises of these types of parts, which is AC plant, primary and secondary refrigerants, blowers, air filters, and ducts. This is AC plant. These are ducts. Here is a this is duct. This is vents. And this is air filters, and this is blower. Now, before we further move on to other slides, let us discuss the working of air conditioner, because it is a simplest unity that from which we can understand the process of air conditioning. Now, air conditioning in window AC, if we take up the example of window AC, it draws in room air through the front filters behind the grill. It filters the air passing through the cooling coil and cool the air and throw back inside the room by the blower behind the supply grill and the
in this process, the temperature of the room keeps on lowering with each cycle. So let us understand this process with the help of diagram. Now this is a cutaway section of a window AC. Here on the left hand side, the small grill, this grill is evaporator coil. The larger one is on the right side is expand. This is condenser coil. In between there is a motor, and on motor on the left, on the rear side, this blower is fitted, and on the right side, on the front side, a fan is fitted behind the condenser. And there at the extreme right corner, this is a compressor along with strainer. Now this is a top view of the window AC. I will explain briefly, very briefly. Now, if you can see here, and this box is divided into two chambers. This black line is dividing this whole box whole into two chambers, upper part and lower part. This lower part fits inside the room, and the upper part is uh, hanging outside the room window, our room's window. So at the inside part, we can see this is a blower, and this blue part, this is a evaporator coil. Now the this refrigerant, it move past the strainer, and it enters at the one end of the evaporator coil. Now there is an expansion device Yes. here as Anoopji want to ask Uh, a question. yeah. No, this is a very right example that whosoever is looking at the top view of the air conditioning. So this is a very good example of understanding the working of the air conditioning window AC. And if the black line is there, then we could split it into the two sections, that Yes, indoor unit and outdoor unit. But yes, yes, if somebody is having a question, or somebody needs to understand this, this is the very right example. So most of the time we used to see that it is a white box hanging on our windows, but how it is working, so it is not understandable from the uh, black box. But here you could see from the downside of the, if I need to explain it in this way, that hot air is going from the downside, and it is going inside the chilling coil, and the blower is there which is returning the cold air into your room. So right now cursor pointing is not there, so I cannot move my cursor. But this is the way. I think it is the right example Mr. Anil has set it. Yeah, please carry on. okay, okay, sorry. So I think Mr. Anoop has already made many things more clear. So this is a window AC. Now this black line is a dividing line. Now what is happened? This single motor operates the two things. One is on the one side there is a fan, on the other side there is a blower. Now let us say the room temperature initially is at 34 डिग्री सेल्सियस. जब हमने एसी स्टार्ट किया उस समय टेम्परेचर जो रूम का था वो 34 डिग्री सेल्सियस था, और वी हैव सेट द टेम्परेचर टू 26 डिग्री सेल्सियस. लेट अस से हमने थर्मोस्टेट से 26 डिग्री सेट कर दिया. अब हमें क्या करना है? वी विल सी दिस हाउ एसी विल थ्रो आउट द हीट by this process, and it will condition the air up to 26 degrees celsius from 32 degrees celsius. Now at the start, these blue arrows, these are showing that this अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रेड बैंड दिख रहा है नीचे, दोनों तरफ दो रेड बैंड्स हैं जो कि इसके थ्रू पास ऑन होके ब्लू हो रहे हैं. इट मीन्स कि जो रूम की एयर है, इट विल फर्स्ट पास थ्रू द एरे ऑफ फिल्टर्स बिहाइंड द दिस इवेपोरेटर coil, and once this hot air passed over through the fins and over through the chilled coil of the evaporator, it ultimately cools down to certain extent, so it becomes blue. Now this chilled air is then thrown back through the side grill of the AC. अगर आपने AC ने सामने देखा हो तो AC के अंदर दो तरह के ग्रिल्स होती हैं. एक साइड ग्रिल होती है और एक होती है बड़ी वाली ग्रिल जिसके पीछे फिल्टर लगे होते हैं. तो बड़ी ग्रिल से एयर AC के अंदर आ रही है और साइड ग्रिल से एयर जो है बाहर आ रही है, रूम के अंदर वापस आ रही है. सो दिस white blue band showing that air is returning back to the room. But now at this point, this temperature of the air is now lowered to some extent. Now when the air enters into this filters, its temperature was 32 degrees celsius, but after first pass the temperature becomes, let us say, 32 degrees celsius. So this process keeps on repeating till
let us say at the first pass it is 32 to 20 30 degree, then 32 to 28, then 28 degree air pass through the this evaporator, it becomes 26 degrees Celsius. Now the set temperature is reached, then thermostat will turn off the compressor. So this is the one side of the picture. Now let us look at the other side of the picture. Now the rear side of the window AC, it comprises of condenser unit. अब कंडेंसर यूनिट का मेन फंक्शन है कि जो हमारी जो रेफ्रिजरेंट था जिसने ये सारी हीट जो है यहाँ से रिमूव की है, इट मीन्स इसने रूम की हीट को क्या किया है, यहाँ से रिमूव किया है, तो वो सारी हीट को रिमूव करने के बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिकम्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर्स. सो दिस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर्स इज शोन बाई रेड लाइन. तो ये जो है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर्स जो है ये कंप्रेसर के अंदर जाएंगे. इट विल एंटर थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंप्रेसर, turn into the compressed into the low volume high temperature high pressure this refrigerant vapors which is shown by red line. अब इनकी जो लेटेंट हीट है वो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से जब तक इसकी लेटेंट हीट को हम रिमूव नहीं करेंगे ये रेफ्रिजरेंट वेपर्स कंडेंस नहीं होंगे. तो इसीलिए इस पूरे यूनिट का नाम जो है कंडेंसर है. So when these vapors enters at one end of the condenser is a sort of heat exchanger. There is a fan which is installed at the rear side of the condenser unit. It throws the air on the over these tubes and fins. जो एयर कहाँ से आ रही है, इस दिस एयर इज कमिंग फ्रॉम द बोथ साइड एंड्स ऑफ द एसी. अगर आपने देखा हो साइड एंड पे थोड़ी कटिंग हो रखी होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा हमें खुला या ओपन एरिया में छोड़ना होता है. तो ये साइड से जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे एयर आ रही है वो इसके ऊपर हम थ्रो करेंगे. इस समय रेफ्रिजरेंट वेपर्स का जो टेम्परेचर है इट मे बी अराउंड वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस. तो जब ये एम्बिएंट एयर यहाँ इससे पास होगी इट विल टेक अवे द लेटेंट हीट ऑफ द वेपर्स, and ultimately the vapors when reaches to the other end of the condenser coil they becomes fully condensed. They will condense and then again they return to their liquid phase. अब liquid phase जो refrigerant है it will be collected inside the receiver. रिसीवर से वो फिर जाएगा उसके अंदर एक्सपेंशन डिवाइस में. एक्सपेंशन डिवाइस विल एक्सपैंड एंड इट पास थ्रू द दिस स्ट्रेनर एंड देन अगेन द दिस एज सुन एज द एक्सपेंशन इज देयर temperature is very lower down and this low temperature liquid refrigerant again enters into the evaporator coil where they again start doing the taking up the heat of the room air. So in this way whole AC works. So इसलिए मैंने स्लाइड पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया. यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. Yes, students who are connected related to electrical engineering or mechanical engineering or who are attending this lecture can ask the questions, because now you have two experts sitting with you. One is from industry and one is having both the experiences in industry as well as from the teaching and research. So you guys can please ask questions that will help you. Yes, sir. Okay. I will take on the question if something comes in. Okay, fine. So I think there is one question. Yes, there is one question. Okay. Just hold on. Please explain triple E rating and how to decide for 3, 4, 5-star AC and other equipments, and how much money and energy saving is there after choosing particular rating AC. Okay, this is very relevant question and I have covered everything in my forthcoming slides. So I will take these questions over there. So let me show you another slide. Here I have shown the main components of air conditioning system. So these are the main units. या वैसे मैंने एक बार बता भी दिया है. Compressor unit, condenser unit, evaporator unit, expansion device, air filtering units, receiver, strainer and flash chamber, and last is double shaft motor. ये सारी चीजें जो है हमने AC में देख ली हैं यहाँ पे. ठीक है. So next is ये मैंने थोड़े इसमें एडिशनल जो है मैंने डायग्राम्स डाल दिए. जैसे हमारे घर में जो स्प्लिट एसी होता है, उस स्प्लिट एसी का ये जो है एक कंडेंसर और ये एवापोरेटर कॉइल है. ये देखो ये एवापोरेटर कॉइल है स्प्लिट एसी. बेसिकली एवापोरेटर कॉइल्स it absorbs the latent heat from the refrigerant space and produces the equivalent amount of refrigerating effect. This is the compressor units. There are many types of compressors: rotary compressor, reciprocating compressor, centrifugal compressors. So compressor का main function होता है to create the low pressure and high pressure differential across the condenser and evaporator. अगर compressor नहीं होगा तो थोड़ी देर के बाद ही ये साइकिल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वेपर्स जब बनते हैं तो उनको वहाँ से रिमूव करना बहुत जरूरी है.
So only equipment that removes the vapors from the low pressure side is compressor. So as soon as the compressor do its work, the low pressure side is created. लेकिन जैसे ही कंप्रेसर बंद होगा, दोनों तरफ जैसे ही प्रेशर डिफरेंशियल जो खत्म हुआ, आपका जो यूनिट खत्म जो है वहाँ से जो वर्किंग है उसकी वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी. नेक्स्ट इज कंडेंसर यूनिट. ये हमने देखा हुआ है बैक साइड पे जो लगा होता है, उसके पीछे भी फैन होता है. दिस इज कंडेंसर यूनिट. There are many types of expansion devices. This is a typical capillary tube expansion device which provide a large and vast surface area to the liquid refrigerant. So as soon as the liquid refrigerant enters into this capillary, it suddenly experience a sudden pressure drop. These are the various types of air filters: mechanical filters, chemical filters, biological filters. ये कई डिफरेंट तरह के हम फिल्टर यूज करते हैं अलग अलग जगह पे. So filters can remove the impurities, pollens, molds, mad, dust, particles, everything. ब्लोअर्स हैं, कई जगह पे बड़े प्लांट्स में हम ब्लोअर्स यूज़ करते हैं. अगर हमारे घर में जैसे एसी लगा उसमें इनबिल्ट है फैन लगा हुआ है तो वहाँ ब्लोअर की जरूरत नहीं है. These are the ducts and vents. Ducts and vents are used when the HVAC system is very large, like Elante माल आपने देखा होगा, या आपने बसेस के अंदर देखा होगा, वहाँ डक्ट्स लगी होती हैं. आप डक्ट्स जो है यू कैन मैनुअली कंट्रोल द डक्ट्स इन योर कार. जैसे रेयर डक्ट्स होती हैं, फ्रंट वेंट्स होती हैं, फ्रंट से लेके रेयर तक जो एयर जा रही है वो डक्ट्स के थ्रू जाती है. डक्ट्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम वेंट्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर HVAC सिस्टम. So these are the few very important terms that are related to energy efficiency. First one is 1 ton of refrigeration, which is abbreviated as TR. Then second is the coefficient of performance, which is abbreviated as COP. And third one is energy efficiency ratio, EER. Now 1 ton of refrigeration का मतलब क्या होता है? It is a basically unit of refrigeration produced by any equipment. तो अगर हमने एसी लेना होता है तो हम उनको जो शॉपकीपर को बताते हैं कि हमें 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का चाहिए, 3 टन का चाहिए. तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिट which specify the capacity of any equipment. So what is 1 ton of refrigeration? It signifies the cooling effect produced by uniform melting of 1000 kg of ice homogeneously over a span of 24 hours from and at 0 डिग्री सेल्सियस. ये टेक्निकल टर्म्स है, तो सिंपल अगर मैं मेथड आपको लैंग्वेज में बताऊं तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी क्लोज्ड रूम के अंदर या स्पेस के अंदर 1 टन आइस को रख दें, उसकी जो पूरी जो ब्लॉक को रख दें, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर रूम का अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आइस विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स. सो एज सुन एज इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग हीट, तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. तो जब आइस मेल्ट होगी तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब भी हम किसी जगह से हीट को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस होती है. तो रेफ्रिजरेशन का यही मेन फंडा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी 1 टन आइस हीट रिमूव करेगी किसी भी स्पेस में से ओवर अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, और उसका अगर टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखें 0 डिग्री, तो जितनी भी रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो इसी तरह से जितने भी हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको हम इसकी कैपेसिटी को इसी तरह से सिग्निफाई करते हैं. नेक्स्ट इज COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू द टोटल वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट. COP की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, कभी 1 से कम नहीं होती. जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल के अंदर एफिशिएंसी 1 से हमेशा कम होती है, लेकिन COP उसका रिवर्स है. COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जितनी COP की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा. तो आपने अगर BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग देखी हो या स्टार लेबलिंग देखोगे आप, तो उसके ऊपर लिखा होता है COP या EER या EER, SEER, वो सारी एक ही चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, वो है COP बेसिकली. तो उसका जितना भी COP की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा. अब COP Basically, this is a machine efficiency. All the parameters are signifying to machine efficiency. मशीन Where एफिशिएंसी, the values are higher, then it means that with the lesser amount of energy, you could use the better more, cooling. you can Yeah, produce more cooling. Yeah. more cooling. So COP is coefficient of performance. So here, EER is, can you answer this question regarding 3, 4, 5 star kind of stuff? I will repeat the question again if you can it is answer it. coming up in the Yeah, next slide. it's in the next slides Okay. are Coming there. up, Okay. because we are going in a phased manner. So this is EER, energy efficiency ratio.
Then SEER, these are the specialized term which is used for our countries, yeah, specific regions. This is seasonal energy efficiency ratio, and ISSER is Indian seasonal energy efficiency ratio. Basically, these are all signify all the same things. Yes, almost same, identical है, इसमें कोई ज़्यादा difference नहीं है. अब यहाँ पे देखो हीट पंप जो है जिसको COP की हम बात कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है. Now let us say this is blue space is showing the space which we want to refrigerate. मान लो ये AC या ये आपका फ्रिज है जिसको हमने कूल करना है. तो अगर यहाँ से हमने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो यहाँ से हमें हीट रिमूव करनी पड़ेगी. लेट अस से वी रिमूव Q1 अमाउंट ऑफ हीट. Dr. Saab, my just humble request is that maybe we may be from the technical side, but into the practical implementation. So we may not be that much interested into the learning the formulas. So can you please, if you could just Skip this. move it, just because we know that COP Okay. is there, but Okay. just it's a request. Okay. Okay, no problem. Now next question is EER, energy Yeah, efficiency ratio. yeah, It is the ratio of cooling effect produced to the total energy supplied to the compressor. So basically EER का मतलब क्या हुआ कि कितने एनर्जी जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया किसी इक्विपमेंट ने, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स या किलो वाट, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई किया हमने उसके लिए. सो यहाँ से हमें समझ आ सकता है कि जैसे यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड हो रही है ना, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर वाली टर्म्स को रिप्लेस कर दूँ या यहाँ पे मैं ले लूँ कि कितनी जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा RE डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, वर्क डन की यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे टोटल एनर्जी इनपुट. तो वो अब हमारा ये टर्म्स जो बन जाएगी वो आ जाएगी EER. right. सो दीज आर द दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि EER वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है और क्या सिग्निफिकेंस है. EER और वो तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ दीज EER वैल्यूज, these values are supplied by the Bureau of Energy Efficiency. Bureau of Energy Efficiency is a single organization which monitors the high energy guzzlers equipments in India. अब अगर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 2013 से पहले अगर किसी ने एसी लिया हो, 2013 या 12 के आसपास मेरे मुझे याद है, उससे पहले कोई स्टार रेटिंग नहीं होती थी. Right. There was no star rating before 2013, and there was no organization that test or that provides the this star labeling. Rating. तो Yeah. रेटिंग, हाँ. तो उससे पहले जब हम एसी लेते थे तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं था कि एनर्जी एफिशिएंट है या क्या है. हमें हमारा एक ही उसमें ये हमारा उसमें होता था कि एसी सस्ता होना चाहिए, कूलिंग बहुत अच्छी करता है जी. उसने कहना कि कूलिंग बड़ी अच्छी करता है और सस्ता है जी ये, मतलब इट इज़ इकोनॉमिकल. तो हमने क्या करना, अच्छी कंपनी का या कोई रेप्यूटेड ब्रांड देखा और एसी ले लिया. मैंने मेरा 2013 वाला एसी जो मैंने रिप्लेस किया था, तो मेरा बिजली का बिल जो है इट वाज ऑलमोस्ट हाफ्ड, कम टू हाफ. मुझे पता नहीं था इतना वो इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. और बाद में मैंने उस पर रिसर्च किया तो इट वाज, मैं 10 घंटे अगर चलाता था उसको, इट वाज टेकिंग अराउंड 24 यूनिट्स पर डे. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही स्टार रेटिंग शुरू हुई 2013 के बाद, तो 2013 के बाद जो स्टार रेटिंग शुरू हुई तो इतना इसमें इनका जो एजेंडा था वो एजेंडा भी क्रॉस हो गया था कि हमने इतनी एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू इतने जो है हमने पावर सेव करनी है. मतलब जो मैन्युफैक्चरर के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि इतने एफिशिएंट सिस्टम बनने शुरू हो गए कि जो हमारा जो टारगेट था कि हमने उस ईयर में इतने हमने सेविंग करनी है, वो सेविंग टारगेट जो था 3 टाइम्स अचीव हो गया था. इतना फ़र्क पड़ा था उससे. तो इसके Right. बारे में कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है. हम अभी आज भी क्या करते हैं, हम 1 स्टार 2 स्टार मतलब इनको इग्नोर ही कर देते हैं कि ये ठीक है 1 स्टार तो है. लेकिन मैं आज कुछ आई विल शो यू हाउ इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड योर एनर्जी बिल्स, किस तरह से ये Right. अफेक्ट करता है. नाउ जी. दिस इज अ टेबल विच इज प्रोवाइडेड बाय द एनर्जी दिस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ये वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज जो होते हैं मैन्युफैक्चरर जो उनको एक प्रोसीजर दिया जाता है उसमें टेस्ट करके ये वैल्यूज मिलती हैं सारी जो ईयर की वैल्यूज हैं. तो ये रियली प्रैक्टिकल करके जो वैल्यूज आई हैं. अब इसमें 2 टेबल हैं, लेफ्ट साइड पे है ये आपका विंडो एसी के लिए और राइट साइड पे है स्प्लिट एसी के लिए. स्प्लिट एसी की वैल्यूज हमेशा ज़्यादा होती हैं, दे आर ऑलवेज एट हायर साइड, इट इज़ मोर एफिशिएंट. सो आप देखो फर्स्ट 1 स्टार जो एसी है विंडो एसी, उसकी मैक्सिमम ईयर वैल्यू है. एक क्वेश्चन आया छोटा सा. HVAC systems has high installation maintenance cost in terms of equipment, labor, ROI, operating expenses. Now, how can we use optimum use of HVAC system and is regularly improvement going on for this? ओके. सो
वन स्टार के ऊपर देखो, इट इज़ 2.7 टू 2.89, टू स्टार 2.9 से यहाँ तक है, और इधर देखो यहाँ पे 3.3 से लेके इट इज़ गोइंग अप टू 5 स्टार, जो स्प्लिट एसी है. Now this is a calculation for energy consumption of an AC using EE और ISSER values. अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस से कोई भी आपका इक्विपमेंट है वो डे टन का है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय विद इट्स EER वैल्यू. सो 1.5 इंटू 3.51, ये आपका जो है 3.51 जो होता है, ये हमने अभी उससे पहले हमने एक मैंने आपको दिखाया था 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. सो थंब रूल क्या कहता है हमें कि 1 टन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 3.51 किलोवाट्स ऑफ एनर्जी. So first of all, we multiply this day ton into 3.51. So we will get this value 5.27. Then we divide this value with with the its EER value. एनर्जी So एफिशिएंसी. हाँ, 5.27 डिवाइडेड बाई EER, इसकी EER वैल्यू कितनी थी? 2.7. तो EER वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने, अब यहाँ पे इसके यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 1.95 किलोवाट पर आवर. ठीक है, तो इट मीन्स इट विल कंज्यूम अराउंड 2 यूनिट्स पर आवर. अगर EER की वैल्यू ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो उतना ही यहाँ पे ये वैल्यू टर्म कम हो जाती, छोटी हो जाती, यानी उतना ही इसका जो है एनर्जी कंजम्पशन और कम होती. ये In आगे a हम way, had it been a 5 star, so it would have been divided by 3.5. या Yeah, अगले yeah. टेबल में देखते हैं. नहीं, नेक्स्ट टेबल में किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे देखो आप. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार रेटिंग, 1 स्टार वर्सेस 5 स्टार. ये 1 स्टार है जो ये विंडो एसी है, और ये 5 स्टार है स्प्लिट एसी. नाउ इट इज़ हैविंग ईयर वैल्यू ऑफ 2.7. अब सेम फार्मूला यूज़ किया, 1.5 इंटू 3.51 किलोवाट डिवाइडेड बाई 2.7 जो ईयर वैल्यू है. तो इसका जो कंजम्पशन आई है वो आई है 1.95 किलोवाट पर आवर. अब 5 स्टार की बात करते हैं. Here I would like 1.5, to add. Yeah, here I would it is like all taking to almost half of the power half of this AC. half of the Only consumption. हाँ, आप देखो But it कितना is a डिफरेंस है. very relevant question asked by Mr. Chatwal from RG company that what is the cost and all. See, Mr. Chatwal, already the consumption has been lowered down to the half. But how the commercially it has been projected in the market, that is a different issue. But yes, in terms of the power consumption, the 5 star or the 1 star is having a significantly difference. So we may go for selecting a 5 star product which is a lower cost, so that way your capital investment will be lower down. Yes, very right. So initially, we should not focus on the investment cost, because you must calculate the things for coming 2 or 3 years. So if this is the scenario, you can say the running cost is almost halved for the 5 star equipment. So I don't think there is any harm if you go for this product, even if the cost is somewhat higher, because over the period of time it will give you much higher returns than this equipment. So if you have got the good idea about this, if you have the scenario and you have some knowledge about it, you definitely you will choose this equipment. आज मैं देखता हूँ जिनको नॉलेज है दे ऑलवेज गो फॉर 5 स्टार रेटिंग दिस एसी. जिनको नॉलेज नहीं है दे में गो फॉर 1 स्टार और 3 स्टार एसी. बट वो जो कॉस्ट है, अगर आपका रनिंग पीरियड ज़्यादा है तो वो तो कॉस्ट तो 3 महीने में पूरी हो जाती है. एक ही यानी गर्मी में पूरी हो जाएगी. एक गर्मी में पूरी हो जाती है, इतना डिफरेंस है. दिस इज द स्टार रेटिंग जो अभी बात कर रहे थे कि कैसे होता है. ये देखो, ये इसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेबलिंग दिस प्रोसीजर. यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है जिसपे स्टार रेटिंग दी होती है 1 2 3 4. उसके बाद यहाँ पे देखो ये वैल्यू दे रखी है, EER वैल्यू दे रखी है 2.9. उसके बाद इसको अगर आप एक एवरेज दे रखे थे कि कितने यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा पर आवर या पर ईयर अगर आप इतना रन करते हो, तो ये एवरीथिंग इज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. और दिस वैल्यूज आर वेरी वेरी एक्यूरेट. इसमें ये भी नहीं है कि ये वैल्यूज जो है रिडंडेंट है. दिस इज वेरी वैल्यूज आर वेरी एक्यूरेट बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स नीड टू गो थ्रू रिगरस टेस्टिंग. तो ये सारी वैल्यूज बहुत ही जो है ऑथेंटिक है. अब इसके बाद आते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी दिस एनर्जी, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया मैंने, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन HVAC. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है. अभी ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमें कहा था कि मेंटेनेंस एंड ऑल दीज थिंग्स कैसे उसमें हम कर सकते हैं. तो उसमें ये भी इसका भी रोल है थोड़ा सा. नाउ दीज आर द वेरियस फैक्टर्स. फर्स्ट इज द स्टार रेटिंग. आपने किस तरह का सिस्टम परचेज किया है, उसकी स्टार रेटिंग क्या है. अगर आपने 1 स्टार जो सिस्टम किया है तो डेफिनेटली उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हाई होगी.
अगर आपने 5 स्टार किया तो उसकी कंजम्पशन बहुत कम होगी. Then what is the condition of air filters? What are the thermal settings? Is there any programmable thermostat installed in the system, or you are using this programmable thermostat? What is the thermal insulation? What type of thermal insulation you are using? Then position of the condenser unit, position of the zoning, provision of zoning systems, and last is the type of compressor, whether the compressor is a fixed drive or a variable frequency drive. अभी ये one by one हम discuss करते हैं आगे. These are very important things. अभी आपको ये थोड़ा सा रियलाइज होगा. ये क्वेश्चन और आया आदित्य गोयल जी से कि हाउ इन्वर्टर एसी एंड नॉर्मल स्टैट एसी इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन कंजम्पशन. Yeah, I have already taken many points on this question or related to this question in my last slide. So he has to wait. So ये हमने choose कर लिया था. Now you can look into this slide. This is left side is a clean filter and right side there is a dirty filter. Every AC unit has a filter, whether it is a small or a big one. So how filter affects the efficiency of AC? Let us see. The clogged air filters put lot of strain on the fan, on the compressor, air quality, and it also reduces the heat transfer rate of the cooling coil. अगर एयर अंदर ही नहीं जाएगी, जब हमने शुरू में देखा है एक तरफ से फिल्टर के थ्रू एयर अंदर जा रही है, अगर एयर ही अंदर नहीं जा रही क्योंकि फिल्टर क्लॉग हो रखा है, तो एसी काम कैसे करेगा? तो एफिशिएंसी बहुत बुरी तरह से ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है. द पुअर इनफ्लो कैन आल्सो रिजल्ट इन आइस फॉर्मेशन विद इन द यूनिट. It severely reduces its cooling efficiency and the total failure of the unit is in the worst case. अगर क्लॉग, अगर फिल्टर आपका जो है इतना ज़्यादा क्लॉग हो गया कि एयर जाना ही बंद हो गई है, तो आपका यूनिट ही फेल हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर काम कर रहा है, रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन एयर अंदर नहीं जा रही, तो जो जितनी भी कूलिंग है वो सारी लोकलाइज्ड रहेगी. तो वहाँ पे इतनी कूलिंग हो जाएगी कि वहाँ पे आइस फॉर्मेशन हो जाएगी. वंस द आइस फॉर्मेशन इज देयर, ऑलमोस्ट योर सिस्टम इज कोलैप्स्ड. So as per the Department of Energy of India, उन्होंने जो रिसर्च की थी, they have reported that cloud filter consumes 15% more energy. इसीलिए it is And this is the very common cause we have found in all of the industry and even in the residential yeah, commercial places also, that nobody takes care of the filter. I will personally recommend to clean the filter every 15 days. You will see a drastic effect of the cooling and reduction in your power consumption. great. Even Yeah. I do it myself after Yeah. every 2 years, Every two Yeah, 15 and years, days, that is quite easy 15 to do, days. I think. yeah, that's Very very easy. quite easy. Everybody could do it. So after 15 days, it should be in your routine that you have to clean the all AC Even filters. even the manufacturers these days they have make it very easier. You can easily remove the upper this Yes, yes. tap and pull out the filters. Just wash under the tap और उसको मारो यहाँ पे और clear हो जाता है. And So few of the next manufacturers one, has also given a provision to provide the pressure differential across the filter also. So once your filter is blocked, yeah, so even that indication LED is light also is giving in. indication Yeah, है. Acha. in few of the filters हाँ. also, ACs If there is also. a pressure difference is very high, then Yeah, there will it be means it is some the filter is indication. locked. Yeah. Filter is locked. That's good. Now what you see here, this is our remote control. Someone has set the temperature to 27 degrees Celsius. Now the AC consumption increases with increasing temperature differential across the condenser and the cooler. अब जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं घर के अंदर एसी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कितना टेम्परेचर किस समय सेट करते हो, इट विल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर एनर्जी बिल्स. अभी देखते हैं कैसे. आर सेट टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस कैन बी अटेन्ड मच अर्लियर देन अ सेट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. वो मैंने आपको बताया था ना, साइकिल टेम्परेचर जो है एक साइकिल के बाद 2 डिग्री कम हुआ, 2 साइकिल के बाद 3-4 डिग्री कम हुआ. तो आप देखो 26 डिग्री सेल्सियस इन जो टेम्परेचर है, इट विल अटेन मच अर्लियर देन द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो उतने ही नंबर ऑफ साइकिल कम हो जाएंगे, उतनी जल्दी कंप्रेसर आपका जो है स्टॉप होगा. और जैसे ही कंप्रेसर स्टॉप होगा, आपका पावर जो है कंजप्शन खत्म हो जाएगी. So increase of every degree in set temperature can save up to 5% of energy consumed. This is again this source is ACEEE. नाम भूल गया इसका फुल फॉर्म. दिस इज अगेन रिसर्च का डाटा, रिसर्च किया वो डाटा है. तो हम थोड़ा सेट टेम्परेचर को कंट्रोल करें तो वी कैन आल्सो सेव लॉट ऑफ Very, एनर्जी. very important that we should focus on this last point, that increase of each degree.
means that 5% of the energy consumption we could reduce. So means that if 6 degree we have raised the temperature, then 30% of the energy Yes, consumption we could definitely, come down. definitely. So there is an enormous possibility to, and it is a very big myth we have found in a lot of people using the air conditioning, that you should lower the temperature, then you will feel the pleasant surrounding, but it is not. Maybe 26 27 degrees is a very pleasant, which is also controlling your humidity. So as even though the dew point is whatever the dew point is there, but if 26 to 27 degrees temperature is there in your room, and you are running a fan, so you will be feeling a very good, rather than taking a blanket or a quilt by putting a temperature 20 degrees centigrade. Great, great. So next is adopting the programmable thermostat. The temperature sensors monitors the ambient temperature and provide feedback to the thermostat to turn on or off the system, and this way energy efficiency is improved significantly. It also eliminates the need for manual adjustments and ensures a comfortable indoor environment. I Basically think Dr. Nanda, I have learned something. Finally, I understood why ice form in our AC office in AC, which is installed outside where a lot of dust is there. As per this presentation, it is filter clogging issue. Good presentation, Anil. She's Thank you, very Nanda ji. happy. It is Thank a you, great Nandaji. motivation, great Yeah, motivation for us also. we will not charge for this. Thank you. Thank you. You will get dirhams. Rightly said. So, as we have already talked about the various advantages of automation, basically the programmable thermostat is more about automation because अब क्या होता है रात को आपने देखा होगा कि आपको समटाइम यू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज द टेम्परेचर सेटिंग इज वेरी लोअर तो यू नो नीड टू सेट द टेम्परेचर टू सम डिग्री हायर सिमिलरली दोपहर को क्या होता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टेम्परेचर जो 27 में भी हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है मैनुअली मॉनिटर कर रहे हैं और मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं समटाइम्स क्या होता है रूम में कोई नहीं है ठीक है यहाँ कोई बहुत मल्टीपर्पज़ हॉल है वहाँ पे ऑक्यूपेंट ही बहुत कम रह गए हैं लोड कम हो गया है या ऑक्यूपेंट ही नहीं है वहाँ ऑक्यूपेंसी खत्म हो गई है तो वो सारी चीज़ें मॉनिटर कौन करेगा वो करेगा प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट इट विल कंटिन्यूसली सेंस द लोड ऑन द पर्टिकुलर स्पेस एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द टेम्परेचर सेटिंग अगर वहाँ पे उसको लगता है कि कोई भी जो है इसमें जो है नहीं है पर्सन नहीं है ऑक्यूपेंट नहीं है इट मे स्विच ऑफ द योर AC system or it may reduce the load in case of low number of people. So this is the overall benefit is very high. You can save a lot of energy if you have a bigger system. So next is the significance of thermal insulation. अब thermal insulation तो हमें सबको पता होगा. I think we all are engineers because insulation plays a very important role because if we are cooling or heating any space, if we are let us say we are cooling any space and heat is continuously leaking into the system, then a lot of the energy will be wasted उसको बाहर निकालने में. आप मान लो कि आप एक रूम को आपने ठंडा कर लिया लेकिन वहां से हीट जो आ रही है आपके विंडो पैन से अंदर आ रही है आपके जो है रूफ टॉप से नीचे अंदर आ रही है साइड वॉल से अंदर आ रही है तो अगर आप उसको प्लग कर देते हो जो हीट अंदर आ रही है लीक होकर अंदर आ रही है with different insulating materials या by different methods in that way you can again save lot of energy बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जहाँ आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट है उसका उसका लोड कम हो जाएगा वही जो साइकिल जो 4 बार चलेगा अब उसको 4 बार चलने की जरूरत नहीं है वो 2 बार में इतनी कूलिंग कर देगा सो इसके अलावा और क्या होता है इसमें AC मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन अ रूम विच इज सेंट्रली पोजिशन AC ऐसी जगह पे लगाओ जिसकी लोकेशन ही आपके घर के कहीं अंदर है सेंटर में है जिसके साइड वॉल्स भी जो है धूप नहीं लग रही है उसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है सेकंड प्लग द इनफिल्ट्रेटेड एयर थ्रू द विंडोज एंड डोर्स अब जून जुलाई की जो एयर है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है अगर आपका लेटर से थोड़ी सी भी एयर अंदर आ गई तो उस एयर को कूल करना और उसमें से मॉइस्चर निकालने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो इनफिल्ट्रेटेड एयर जो आप सोचते हो कि थोड़ी सी एयर अंदर आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है तो यू मस्ट प्लग द ऑल टाइप ऑफ एयर्स विच इज कमिंग इनटू द सिस्टम थ्रू वेरियस क्रीक्स एंड ओपनिंग्स एंड लास्ट इज avoid the electrical appliances like refrigerator electrical irons and microwave oven in the refrigerated space अब वैसे तो आजकल घरों में हम देखा होगा टीवी भी लगा हुआ है आपका मोबाइल फोन हो रहा है मोबाइल चार्जर है लैपटॉप चार्जर है कई जगह आप वैसे इक्विपमेंट रख लेते हो तो उन सब का जो है एडिशनल लोड भी पड़ता है AC के ऊपर जिससे भी एनर्जी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है
ये देखो इस तरह से अगर आप घर आपका बना हुआ है तो आप उसको जो है थ्रू प्लांटेशन यू कैन इजीली कवर अप द फॉर द साइड इंसुलेशन ऑफ द सन, जो साइड से धूप आ रही है उसको रोक Yeah. सकते हैं हम, या Here सोलर पैनल the लगा सकते हैं. yeah yeah here I would just like to add that we should see that once we are designing a new house or a new office, then what is my southwest direction? So I should minimize the exposure of my walls to the southwest direction. Yeah, So because that will be a more heating time in the afternoon, that which is heating my all the office premises or any home premises. So we should take care of that also. वेरी गुड. Yeah. सो दिस इज माय, ये मेरा जो घर का मैंने दिखाया हुआ, ऐसी फोटो ले ली. तो मैं देखो ये मैंने कंडेंसर जो यूनिट है कहाँ लगाया. इसके दोनों तरफ से एयर अंदर आती है, ऊपर वाली साइड जो है शील्ड है, इसकी जरूरत नहीं है. तो ऑन द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड इज ओपनिंग, देयर आर लॉट ऑफ स्पेस ऑन द बोथ साइड्स. इट इज परफेक्टली शेडेड इन द इंस्टॉल्ड इन द शेडेड रीजन, एंड नीट एंड क्लीन एयर it will come through this condenser. सो इस तरह से देखो स्प्लिट एसी लगा, जो विंडो एसी है ये भी इस तरह से लगा हुआ है. सारी तरफ ये आपकी स्पेस है यहाँ पे, और ये उसके अंदर शेडो के अंदर है. तो कंडेंसर यूनिट आप कैसे लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. सो पोजिशनिंग ऑफ द कंडेंसर यूनिट. पोजिशन द कंडेंसर एट अ वॉल at a well ventilated and cool space wherever possible. Avoid the direct solar radiation falling on the condenser unit. Provide the shade through the tree plantation or build a shed. और यू कैन आल्सो बिल्ड अ सोलर पैनल शेड. इस तरह से कुछ भी लोग क्या करते हैं, जैसे आप स्प्लिट एसी लगाया तो आप कंडेंसर छत पे लगा दिया. अब आप देखो एक कंडेंसर लगा हुआ है छत के ऊपर जिसपे सीधा जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है. एक कंडेंसर जो है इस तरह का है जिसपे कोई सनलाइट नहीं पड़ रही, जैसे मैंने दिखाया था. अब मुझे बताओ विच वन विल वर्क मोर एफिशिएंटली, ये वाला करेगा या जो छत पे लगा हुआ है, जो जिसपे 40-45 डिग्री की जो है रेडिएशन पड़ रही है. सिंपल. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लो ये जैसे, तो इस तरह के घरों में तो इस तरह लगाया, कई जगह पे घरों में स्पेस ज्यादा होती है, बाहर गार्डन्स वगैरह भी रहते हैं, तो वहां पर आप अगर पेड़ के नीचे लगाते हो कुछ माउंट करके कुछ बना के, तो इट विल बी बहुत ही मोर बढ़िया. एफिशिएंट. इट इज मोर That will एफिशिएंट, be डेफिनेटली. more efficient. मस्त, मोर एफिशिएंट. उसकी तो मतलब नुकसान ही नहीं है कुछ. तो वही है कि थोड़ा सा आपने करना तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी. और थोड़ा सा राइट. जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है उस समय आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है. देन इन द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिटर्न्स. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटिंग द जोनिंग सिस्टम. अब जोनिंग सिस्टम बेसिकली ये घरों के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं लेंटे माल या बिग जो जहाँ पे रेफ्रिजरेटर स्पेस है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी करते तो नहीं है, लेकिन जोनिंग सिस्टम से आप यू कैन ड्रास्टिकली इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ जोनिंग सिस्टम के में क्या करते हैं, वी जोनिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज द कूलिंग एंड हीटिंग बाय डिवाइडिंग द बिल्डिंग इनटू द डिफरेंट जोन्स. By selectively heating and cooling only the occupied zones, it reduces the energy waste and workload of the equipment. An efficient joining system can drastically improve the comfort, energy efficiency, and enhance the lifespan of the HVAC equipment. तो ये मैंने सारा जो बड़ा ब्रीफली बता दिया है. तो ये मिस्टर अनूप इस पे ज़्यादा डिटेल थोड़ा दे देंगे आपको, जोनिंग सिस्टम जो किस तरह से काम करता है. Anoop ji, there is one more question come up for you. What exactly Mr. Anoop Sharma is into as a slide student want to know about MIE and chartered engineer as he written his name. Yeah, थोड़ा सा surely, आप अपनी Vivek. उसमें भी बता दीजिए. Vivek, surely, maybe you could, because this presentation is a very long, because I had already seen. So I think a lot of interesting things are yet to come from this presentation. So I will share my contact number with you, and we could separately discuss about the MIE and chartered engineer. So I think, Dr. Saab, please continue, because I know that this presentation is very interesting and long. So Okay. I think we are shorting So by time. Please. last two slides only. So Yeah. we have just one question. We have posed one question. Someone posed one question Just regarding hold the on. Let VF. me put the question again. One Yeah. is by the Aditya Goel. He Inverter AC. says how inverter AC and normal stat AC is going to make the difference in consumption. Yeah. And there is So one more question on priority solutions. That is, these days sellers do confuse by suggesting inverter type split ACs. Then all the technicians, whether they are into installation or maintenance, they are against inverter types. No, no, no. And Okay. there is one more question. You can take it before starting. Do inverter types require specialized maintenance skills? How are they better than 5-star in case of sale? Okay. I will give all the queries, answer to this all queries. This single slide will will answer all most of their questions.
First, the inverter AC is nothing but it is a variable frequency drive in AC. अब बेसिकली हमारे जो ट्रेडिशनल एसी में क्या होता है, उसका जो कंप्रेसर है इट इज कपल्ड विद एसी, कपल्ड विद अ मोटर विच कैन नॉट रिड्यूस इट्स स्पीड, इट रन एट अ फिक्स स्पीड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपके रूम में लोड या कूलिंग लोड कम हो गया, तो हमें उसी प्रोपोर्शनली वी वांट कि हमारा जो कंप्रेसर है उसके आरपीएम कम हो जाए और जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो भी कम हो जाए, तो एक इक्विपमेंट अपने आप ही उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाए। लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल एसी होते थे पुराने वाले, उसमें ये वाला प्रोविजन नहीं है, दे कैनॉट अकोमोडेट एनी सच टाइप ऑफ सेटिंग्स। बट द न्यू एसीज जो आजकल आ रहे हैं, जिसको हम इन्वर्टर एसी कहते हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। उसमें जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसको जो कंप्रेसर है इट इज कपल्ड विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव मोटर विच कैन रिड्यूस और इंक्रीज इट्स आरपीएम अकॉर्डिंग टू द लोड। अब ये काम कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। The variable VFD based compressors can adjust their capacity according to the actual heat load, unlike the conventional compressors that can run at its peak power all the time. अब आप सोचो कि एक रूम में पहले जो है वो 5 बंदे बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो 5 में से 4 बंदे चले गए, या दोपहर का टाइम था, शाम हो गई, बाहर हीट लोड कम हो गया और अंदर भी हीट जो है कूलिंग लोड कम हो गया। तो उस समय क्या होगा, जो कन्वेंशनल एसी जो कंप्रेसर था वो तो अपना उसी रेट पे चलेगा, वो वैसे ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन जो लेटेस्ट जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो उसको लगेगा, इट द सेंसर विल सेंस कि लोड कम हो गया, इट विल ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली रिड्यूस द आरपीएम ऑफ द मोटर एंड आरपीएम ऑफ द कंप्रेसर। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जो जो 1.5 टन पे काम कर रहा था उसका धीरे धीरे कैपेसिटी में भी 1 टन पे काम करना शुरू कर दे। उसको लगा नहीं और कम जरूरत नहीं है, इट में कम अप टू हाफ ऑफ द टन, तो इट कैन अल्टर इट्स कैपेसिटी। जो VFD बेस्ड कंप्रेसर्स हैं, दे आर मोर क्वाइटर, दे प्रोवाइड मोर कंफर्ट एंड दे आर मोर प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल। अब जो नॉर्मल एसी में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर सेट करते हो ना, तो उसमें एयर चाहे आप 27 डिग्री रखो, या 26 रखो, या 22 रखो, जो उसमें एयर जो जब एयर कंप्रेसर जो काम कर रहा है, जो एयर अंदर से बाहर आएगी वो एक ही टेम्परेचर पे आएगी, 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री पे आएगी या नहीं आएगी, या फिर सिर्फ एयर फैन चलेगा, वो उसमें यही होता है। उसमें ये नहीं है कि आपकी 22 डिग्री वाली एयर आ गई। लेकिन जो लेटेस्ट कंप्रेसर्स हैं उसमें एयर का टेम्परेचर भी उसी के हिसाब से चलता है वो। उसके बाद क्या है, दे पोज मिनिमम startup temperature which eliminates the need of frequent on and off cycling. They ensures the longevity of electrical appliances, wiring and electrical controls. अब क्या होता है कि जो नॉर्मल एसी है, जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग करंट उसका 30 एम्पियर्स है, और 30 एम्पियर करंट अगर इलेक्ट्रिकल बंदा हो तो उसको पता होता है कि इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। 30 एम्पियर करंट इतना होता है कि आपके पूरे घर को ना वो ऐसे हिला के रख देगा, जैसे भूचाल नहीं आ जाता। आपका टीवी चल रहा है तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाएगी, आपकी लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, वो सारा हिल जाएगा एक बार। आपकी जो इट विल पोज लॉट ऑफ स्ट्रेसेस ऑन योर वायरिंग, ऑन योर इक्विपमेंट्स, ऑन योर अदर इक्विपमेंट्स। लेकिन जो VFD बेस्ड कंप्रेसर है, इसका स्टार्टिंग करंट सिर्फ 6 एम्पियर से स्टार्ट होगा। इट स्टार्ट वेरी स्लोली by taking very small amount of current, 6 एम्पियर, then 7 एम्पियर, then 8, 10 to 13, 14, इस तरह से। तो इसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन नहीं होगी किसी तरह की। तो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी सेफ for your electrical appliances, for your household wiring and everything. And at last, due to the high energy efficient operations, these inverter AC helps in reducing the greenhouse gas emission. अब ये अपनी कैपेसिटी को अल्टर कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर क्वाइटर एंड दे आर। हाँ, इनकी उसने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर है, स्पेशल स्किल रिक्वायर है। हाँ, इसमें थोड़ी स्किल जो है चाहिए, स्पेशल स्किल, बिकॉज दे कंप्राइजेज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। एक और क्वेश्चन था कि आर दे उसकी जो 5 स्टार से ऊपर होती है, यस, इसकी रेटिंग 5 स्टार से भी ऊपर है। एट प्रेजेंट जो आ रहे हैं दे आर गोइंग अप टू 7 स्टार्स। Oh, जो स्प्लिट एसी है, दे आर गोइंग अप टू 7 स्टार, 5 से भी ऊपर है उसकी रेटिंग। अनूप जी, अगर आप यू वांट टू से समथिंग ऑन इट प्लीज। Yeah, very interestingly told by Dr. Saab that VFD compressors are there in the new technology, which is inverter ACs. And primarily, I will like to say that it is the biggest myth that people used to ask in the shops that whether this inverter AC will work on the inverter. No. So this is the technology inside the AC, which we called as an inverter, which is uh, AC to DC and DC to AC. So we have, so if somebody from electrical side or electronics is there, though they will understand. So this is
to reduce the jerk load. So I think Dr. Bharti has also made one slide which is showing the jerk load, which is initially to the tune of a 30 ampere, and now it is smoothly running your AC at 3 to 4 amperes throughout the day. So I would like to add here only that this is an efficient machine. This is yes, more efficient as compared to other machines because it is reducing the jerk load, and but we have to take care all of the precautions which Dr. Bharti has told us to keep our insulations better, our filters better. Unless we do that, we cannot achieve the efficiency of this inverter also. So we have to take care of all the precautions to increase the efficiency of the air conditioning. Yes, you could use this inverter. And now one question I interestingly found from Mr. Priority Solutions, that why the technicians while going to install this inverter AC, they are reluctant to install, and they are not getting it convinced to use this type of inverter type AC. Because we have seen that lot of times, because lot of electronics is used in this inverter type split ACs. So the earthing of all the domestic connections has to be perfectly tuned, because if there is some kind of spikes are there, or some voltage fluctuation is there, then the inverter card is going to damage. So they are not recommending this type. And other thing is the kind of tubing for the cooling and heating taking out from the evaporator to condenser, so that of the big more gauge you have to use. So there is I'm not particularly sure about why, but it is recommended, and no technician is using the higher gauge of tube, because they know they don't know how to bend it properly, so they are reluctant to use go for the inverter type of AC. So this is by add on this. But I think Dr. Saab, agar aap wo wala slide, if you have that slide with you, if you could show that the spikes, I think I had seen no I think we have deleted that slide, because that may be going for more theoretical also. So that we may have deleted that. But yeah, this slide, yeah. So I think this is the slide where you could see that difference between the inverter and the non-inverter, where your spike currents are going very high. Okay. So this is the difference. So in a But way, it yeah, keeps the things in control. yeah, in control, yeah. But both the machines has to take out the heat. So which one thing we need to understand, that work done should will be same. Work done efficiency may be different, but work done is same, because if we open the door and put an inverter AC, and we will see the want to set the temperature, even though it will draw a current, but it will draw a current in the tune of 10 to 12 ampere also. So work done will be more if the heat load is more. So it is just reducing the spike currents, which is reducing your increasing your efficiency of the machine and reducing the jerk loads. So this is from my side. So Any there's other one question? more question from Nanda Saab. He says, I always wonder why some companies split AC is too expensive, like Mitsubishi or General, compared to other regular brands in the market. Are they environment friendly, like low carbon footprint, or some other reason? Nanda Sahab, I had personally seen a O journal AC which is used in your area, the Gulf area, where the ambient temperature is into the tune of 52 to 55 degree. They had designed, because we had seen in the initial slides from Dr. Saab that there is a one motor which is coupled to take the heat from the inside to outside. But in the few of the AC, there are two motors where the speed of the fan you cannot reduce for taking out the heat, and parallelly the copper which is used in the your evaporator section also, and the design of fins, and the uh, I could see the difference between the area of the heat exchange is more in the Mitsubishi and O journal, and a few of the good brand Hitachi ACs are there. So this way they are charging more, but yes, these ACs are designed for the high out ambient temperatures also, and they are working also. So for the low carbon print, I don't have any know-how for that.
अच्छा, Anything आवाज नहीं else? आ Any other question? One question I रही। think it is pending from my side, where few people have asked for MIE and chartered engineer. So I'm a Just chartered hold in, on, just hold on, yeah. just hold on. Acha, Ravinder Singh says you have to disconnect. Okay, no problem. And there is one more point from Pushpindarani. VFD has a great role at industry level for energy optimizations. It's good that now the similar function is coming in domestic cases through inverter AC. Okay, fine. ठीक है sir, you can take on the question about yourself. What is an MIE and what is a chartered engineer and how it works. Yeah. I'm Anoop Sharma, Chartered Engineer from Indian Institute of Engineers, which is based in Calcutta. So, to be a Chartered Engineer, you have to have an experience of 10 to 12 years in your field. Then you could apply for the Chartered Engineer certificate. So, for applying the Chartered Engineer certificate, you have to be a member of an Engineers Institute, which is a MIE. So I'm a graduate engineer from Sant Longowal. Then I, after 12 years of experience, I applied for the membership, which is a lifetime membership of the institute. And then there I applied for the chartered engineer certificate. By for the process of applying chartered engineer certificate, you have to show your all of your experience and your work done, or maybe if any of the paper or any of the seminars, whatever, because the role of the chartered engineer is you are a certified engineer now to certify the process. You may not be the expert of, or you may not be the evaluator of the process, but yes, you could understand by virtue of your experience that this process has to be like this and it is getting done by the certain norms. So you just certify the your process ठीक which is done by the chartered engineer. हाँ बस हो गया So this is the thing. So anything else? No, I think that is a good मैं induction. अनूप And Rahul Kumar, अनूप ही है ना वो फैसिलिटेटर है just hold on, Yeah. ठीक हो just hold on, it's not over yet. I appreciate Dr. Anil and Dr. Anoop for this interactive session. Thank you guys. I think it was really a great insight into refrigeration and AC, and I think we can certainly reduce our energy bills as being entrepreneurs as well as being um, in our homes also. Thank you, both of you, for coming and giving your time on Sunday for Slight Alumni Association. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.